Hello बच्चों, let's see the question. Here we have two statements. In statement 1, micelles are formed by surfactant molecules above the critical micelle concentration. In this statement it says micelles are formed when the surfactant molecules above the critical micelle concentration, that is CMC. In statement 2, the conductivity of a solution having surfactant molecules decreases sharply at the CMC. Here it says conductivity of a solution having surfactant molecules decreases sharply at CMC. Now let's solve this question. For solving this question, first we should know the basic concept that like what is micelles, what is CMC, critical micelle concentration, and what is conductivity. Micelles are substances at lower concentration. It behaves like a electrolyte, but when we increases the concentration, they associated and form colloid. This is also called as associated colloid or aggregated colloid. So this is micelles. Now talk about the CMC. This is critical micelle concentration. So CMC, minimum concentration above which the formation of micelle takes place. Okay, so this is called the CMC. Now talk about the conductivity. So in general, we all know that conductivity is a measurement of the ability of an aqueous solution to transfer an electrical current. So we take the example here. So for better understanding these statements, so soap formula is RCOONA positive. Suppose in a beaker, this is water. In this we added the soap. So what will happen here if we added the soap in a small
concentration, it behaves like a electrolyte. Okay, but if we increases the concentration, the concentration of soap, what happen here? They form the micelle. Okay, like this. This is O negative, O negative, O negative, O negative, O negative, and O negative. Okay, again I repeated this. When the concentration of soap is less in water, they behave like a electrolyte. But if we increases the concentration of soap particles in that, so it form the micelles. Now look at our first statement. Here, micelles are formed by surfactant molecules above the critical micelle concentration. Okay, तो this statement is true because हमने यहाँ पे क्या देखा कि micelles क्या बन रहे हैं, सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल से बन रहे हैं. जो सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, सोप के हैं. उससे बन रहे हैं किस पे, CMC पे, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन. ओके, मीन्स हमने या तो इसके इक्वल कर दिया या इससे ज्यादा बढ़ा दी कंसंट्रेशन सोप की, तो इन्होंने क्या करा, मिसल बना लिया. सो हमारा ये ऑप्शन तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया. नाउ टॉक अबाउट द स्टेटमेंट 2. सो इन दिस वी कैन सी हियर, नॉर्मली soap particles behaves like a electrolyte. So ये क्या होगा, normally electrolyte होंगे. तो क्या होगा, ये वाटर में फ्रीली मूव करेंगे. ओके, तो इनमें कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. बट अगर हम CMC, नेक्स्ट इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, सोप का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. सो कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, देन क्या होगा, ये एग्रीगेट हो जाएंगे और एसोसिएट हो जाएंगे. एसोसिएट होके ये क्या बना लेंगे, मिसेल. ओके, अब क्या होगा, जब ये एग्रीगेट हो गए तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि अब ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे इन वाटर. दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. Now let's see the options. So in option A, if both statements are correct and statement 2 is correct explanation of statement 1. तो क्या हमने देखा अपने स्टेटमेंट्स में कि हमारा स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. बट स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट रीजन नहीं है स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करने के लिए. सो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन 2. इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. सो हियर वी कैन सी दैट अवर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2
is not the correct statement for explanation of statement 1. तो ये क्या होगा, हमारा करेक्ट हो गया. In C option, if statement 1 is correct but 2 is wrong, so this is wrong. Both are correct. D, if both statements are wrong, so this is wrong because both are correct. In E, if statement 1 is wrong but statement 2 is correct, so this is also the wrong because statement 1 is correct and 2 is correct. So here we can see that our final answer is option B. Hope you all understand the solution of this question. Thank you.